बताया कि बहुत सारी इनपुट्स रिसेंट डेज में आ रही थी। इसी तरह की एक इनपुट को डेवलप किया गया और आर्मी की कंसर्न यूनिट के साथ शेयर किया गया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें आर्मी और एसओजी ने कॉर्डन्स एस्टेब्लिश किए और दौरान कॉर्डन एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ। उनमें से एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ और दूसरा जो है वो पार भागने में कामयाब हो गया। इसकी जो पहचान हुई है, निशानदेही जो हुई है वो मुनीर के नाम से हुई है। बल्दिए ستار बग्याल दारा का रहने वाला है, पुंछ का रहने वाला है ये। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मुनीर जो है ये एचएम का मिलिटेंट था, 1996 से एक्टिव था और अभी ये डिविजनल कमांडर एचएम का था और इसने बहुत सारी वारदातें इस हमारे जनरल एरिया में पिछले कुछ दिनों में की हुई थी। इसका जो टास्क था एज पर इनपुट टास्किंग इसको ये हुई थी कि इस पीर पंजाल एरिया में मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करना है, जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं उनको एक बार रिग्रुप करना है और जनरल पीस और ट्रैंक्विलिटी इस एरिया की डिस्टर्ब करनी है। इसकी एलिमिनेशन से बहुत बड़ा जो नेफेरियस डिज़ाइन था हमारे दुश्मन देश का, वो हमने उसको फेल करने में हमें कामयाबी मिली है। इसमें हमें सिविलियंस का बहुत बड़ा योगदान मिला है। सिविलियंस से हमें बहुत सारी इनपुट्स मिल रही हैं और हमें पूरा यकीन है जिस तरह से सिविलियंस का हमें साथ मिल रहा है, हम सब मिलके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, हमारी इंट एजेंसीज और सिविलियंस एक बार फिर से पुंछ को मिलिटेंसी फ्री जल्दी से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। The Indian Army and the Special Operations Group of Jammu and Kashmir Police has eliminated a major infiltration bid along the line of control in the Poonch sector. The complete operation was based on intelligence of Jammu and Kashmir Police about the likelihood of an infiltration attempt duly corroborated by military and civil intelligence agencies. The Indian Army troops along with the Special Operations Group of Jammu and Kashmir Police had put in place multiple ambushes along the line of control in the Poonch sector, which resulted in elimination of this infiltration bid. At approximately 0200 hours during the night of 6th and 7th of August 2023, own alert troops deployed on the line of control in the Poonch sector observed a suspicious movement of a group of 2 individuals trying to sneak across the line of control. Own alert troops kept the movement of the infiltrating group under continuous observation through new generation electro-optical devices, and as both the infiltrators moved towards own site of the line of control, the ambushers challenged the infiltrators. On being challenged, the infiltrators opened fire on own troops. In the ensuing firefight, one terrorist was shot dead and the other was injured. The injured terrorist managed to sneak into the forest close to the line of control, taking advantage of the thick foliage, rain and the rocky outcrop. The area was immediately cordoned to prevent their escape across the line of control. A joint search operation was launched after the first light, in which dead body of one terrorist was recovered. The killed terrorist was identified on the basis of police records as Munir Hussein, son of ستار محمد, a resident of Bagyal Dhara village, Pونچھ. He was a dreaded terrorist, a divisional commander of the Hizbul Mujahideen. The individual had gone to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in the 1990s and has masterminded a number of attacks on the security forces. Input suggests that he has been given the task of revitalizing the terrorist activities in southern part of the Pir Panjal ranges. The search operation led to recovery of one AK-56, one 9mm pistol with silencer, one magazine of AK-56, 10 rounds of 7.62 mm, 9 rounds of 9 mm, 2 hand grenades, eatables and medicines. Recovery of pistol with silencer indicates that the individual was likely to be quite high in the Tanzim hierarchy. By their quick reaction, alert Indian Army and Special Operations Group of Jammu and Kashmir Police have thus prevented a major infiltration bid and neutralized the top divisional commander of the Hizbul Mujahideen. The operation has once again proven the existing synergy between all security agencies operating in this area and highlights
the close coordination between them. This incident also highlights Pakistan's attempt of reviving terrorism in south of Pir Panjal ranges, exploiting the terror veterans. We wish to assure the people of the region that the Indian Army continues to remain alert on the line of control and is fully prepared to thwart any such attempts in the future too. I will now hand over to SSP Pونچھ to cover other relevant aspects. Jai Hind.